learners, this is Pranshi Verma. Welcome to my channel guys. In today's YouTube session, we are going to discuss Computer Network Lecture 1. And guys, these lectures are very important for our GATE aspirants and regular students of Computer Network. मीन्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस. एंड गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कंप्यूटर नेटवर्क से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दिस इज कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज, जिससे आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कंप्यूटर नेटवर्क से. एंड गाइस, इस सीरीज में हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आंसर भी डिस्कस करेंगे. बट इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर 1, computer network introduction and some other terminologies of computer networks. Okay, let's begin. And I hope आपको समझ में आ गया होगा. ये कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज जो कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं अपने रेगुलर सब्जेक्ट के लिए. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. इन दिस फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क. ओके गाइज, कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? Students, computer network is the collection of two or more computers that are interconnected with each other to perform data communication using the data communication protocol through communications media, means wired or wireless. जो communication media हम computer network पे use करते हैं वो may be wires हो सकती है, may be wireless हो सकती है. So basically computer network एक collection है टू और उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स का जो आपस में इंटरकनेक्ट है, मीन्स जुड़े हुए हैं, एंड विद ईच अदर टू परफॉर्म डेटा कम्युनिकेशन, एंड परफॉर्म करते हैं डेटा कम्युनिकेशन टास्क with the help of data communication protocols, different types of protocols through communications media, means communication media is used for communicating between two computers. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. So these computer can share information, data, programs and use of hardware together. Okay, so this is the brief description about computer network. Next, data communications that can be done included text data, images, video and sound. Okay guys, computer network में जो data communication होता है, maybe data text data हो सकता है, maybe images हो सकती हैं, maybe video and maybe sound and many more. Now, next definition of computer network. A computer network, often simply referred as a network, is a collection of computers and devices interconnected by communication channels that facilitate communication and allow sharing of resources and information among interconnected devices. Okay, लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, एंड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स डेटा कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर्स आपस में विद द हेल्प ऑफ, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन अमंग इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. ओके, देयर आर डिफरेंट नेटवर्क्स इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में. Guys, there are basic three types of different networks. First one is LAN, second one is MAN and third one is WAN. Okay, firstly हम बात करेंगे LAN की. LAN समझेंगे because LAN से भी कंप्यूटर नेटवर्क में आपका रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एंड 2 मार्क्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में भी LAN से आता है. So this is very important. LAN देखते हैं guys. LAN stands for Local Area Network. Is a network that is confined to a relatively small area. Okay, LAN is a network that confined means cover करता है small area. It's generally limited to a geographic area such as a lab, school or building. For example, आपके स्कूल में जितनी भी लैब्स होती हैं उसमें जो कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ LAN नेटवर्क होते हैं. ओके, LAN computers rarely spans more than a mile apart. Okay, means ये माइल अपार्ट के लिए LAN यूज करते हैं, जहां पर आपके लिए ओनली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है आपके लैब्स में, आपके स्कूल्स में, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैब्स में. तो फॉर एग्जांपल यही सबसे अच्छा एग्जांपल है स्कूल लैब्स का.
लैन के लिए, तो वहां पर हम किस टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं गाइस? लैन, ए लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लैन में। In a typical LAN configuration, one computer is designed as the file server. Okay. In a typical LAN configuration, one computer is designed as the file server. Means single computer server होता है and उससे different types of other computers interconnect होते हैं. Okay. It stores all the software that controls the networks as well as the software that can be shared by the computers attached to the network. And वो particular file server means computer network server. Computer network में जो server computer होता है वो क्या करता है guys? It stores all the software that controls the whole network of computers as well as the software that can be shared by the computers attached to the network. Okay. Next, computer connected to the file server are called workstations. Okay. Computer connected to the file server are called workstations. The workstations can be less powerful than the file server and they may have additional software on their hard drives. On many LANs, cables are used to connect the network interfaces card in each computer. However, one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. Okay. So, on many LANs, cable are used to connect the networks. Local area networks में हम computers को connect करने के लिए, interconnect करने के लिए cables का use करते हैं guys. Okay. And with the help of network interface card in each and every computers in a network. However, one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. Okay. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं LAN में. Most LANs connected workstation and personal computers. Each node individual computers in a LAN has its own CPU which executes program and it's also able to access data and devices anywhere on the LAN. This means that many users can share expensive devices such as laser printers as well as data also. User can also use LAN to communicate with each other by sending email or engaging in chat sessions. Okay, so this is all about LAN, local area network. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में. Now, 3 characteristics features of LAN. First one, the size of a LAN network. Second one is the topology of the local area network, and third feature is the technology used for transmission in LAN. One by one बात करेंगे हम 3 characteristics of features of LAN पर. First one, in simple LAN configuration, a single cable runs through the entire setup and peripherals and computers are attached to the cable. Traditional LAN speeds are 10 Mbps to 100 Mbps and modern LAN cables are capable of much higher data transfer per second. Okay. In case 2 or more systems need to use the LAN at the same time, then an arbitration mechanism is deployed to resolve the conflicts. Okay. A first come first serve policy or prioritized approaches may be chosen. Okay. Guys, जहाँ LAN में प्रॉब्लम आती है at the same time, then the arbitration mechanism is deployed to resolve the conflict. Conflict means one time में, single time में 2 or more systems को एक particular data की या फिर एक particular information की need होती है, तो वहाँ पर किस तरह वर्क करता है guys LAN? A first come first serve policy or a prioritized approach may be chosen in LAN network. Now हम बात करेंगे LAN topologies पर. Topology is a very important topic your computer network subject. अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन टोपोलॉजीज पर आता है, एंड आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टोपोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके. या फिर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क एज ए सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर भी आपसे टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके. सो LAN टोपोलॉजीज एंड टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ स्टार्ट करते हैं LAN टोपोलॉजीज. ओके.
फर्स्टली हम बात करते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी 6 टाइप की होती है गाइस। फर्स्ट वन स्टार टोपोलॉजी, सेकंड वन बस टोपोलॉजी, थर्ड वन रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ वन मैश टोपोलॉजी, फिफ्थ वन हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड लास्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। वन बाय वन हम सभी टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी each device has a dedicated point-to-point link to a central controller called a hub. Okay, यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी किस तरह वर्क करती है गाइस? स्टार टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल कंट्रोलर हब से। ओके, and each device has a dedicated point-to-point link to a central controller. Means this is your central controller and this is system 1, this is system 2, this is system 3 and this is system 4 and many more systems. Okay, most used LAN topology. Okay, star topology is mostly used LAN topology. If one device want to send data to another, it sends the data to the controller. Okay, suppose स्टार टोपोलॉजी में एक डिवाइस को डेटा सेंड करना है किसी अदर डिवाइस को, मीन्स किसी अदर सिस्टम को, it sends the data to the controller which then relays the data to the other connected devices as shown in the figure. इस तरह से। Okay, this is the figure of star topology. Next, each device needs only one link and one input-output port to connect it to any number of others. Okay. Now, advantages of star topology. First advantage is robust. Means a star topology is robust. If one link fails, only that link is affected. All others link remains active. Okay, this is the main advantage of star topology. If one links fail, only that one link is affected. All other links remain active. Next one is, as long as hub is working, it can monitor link problems and bypass defective links. Okay. Now disadvantages of star topology. First disadvantage is, if hub goes down, the whole system dead. If any case, suppose hub goes down, so the whole system dead and affected by this hub. Next disadvantage is, more cabling is required in a star than rings or bus. And next disadvantage है स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी जब हम अरेंज करते हैं वहां पर हमें मोर केबल्स रिक्वायर होती हैं फॉर कंपेरिजन टू रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। ओके गाइज, आई होप आपको स्टार टोपोलॉजी समझ आया होगा। नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। अब देखते हैं बस टोपोलॉजी। ए बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट, one long cable act as a backbone to link all the devices in a network. Okay, carrier sends multiple access, collision detection. Okay, CSMA CD is a very important topic. ये हम लेक्चर सेकेंड या थर्ड में कवर करने ही वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। Is the accessing techniques used? Okay, the traffic can go in either direction, that is its bidirections. Okay, बस टोपोलॉजी बाई डायरेक्शनली वर्क करता है गाइस। यहाँ पर आपका ट्रैफिक मीन्स डेटा कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनली फॉर्म में होता है। किसी भी डायरेक्शन में आप डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टेप्स एज शोन इन द फिगर। इस तरह से एज ए बैकबोन बस टोपोलॉजी वर्क करता है। दिस इज केबल एंड, यहाँ से केबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर केबल एंड हो रहा है एंड दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज ड्रॉप लाइंस। इस तरह से बस टोपोलॉजी से विद द हेल्प ऑफ केबल बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। फर्स्ट एडवांटेज इज ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, मीन्स installation is easy in bus topology. Second advantage is require less cabling than mesh or star topologies. बस टोपोलॉजीज का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है गाइस, वहां पर लेस केबल रिक्वायर होता है कंपेरिजन टू अदर टोपोलॉजीज, फॉर एग्जांपल मैश और स्टार टोपोलॉजीज। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। फर्स्ट वन,
डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस मीन्स बस टोपोलॉजी में कोई भी न्यू डिवाइस ऐड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज ए फॉल्ट इन द बस केबल स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशंस. ओके, मेजर डिसएडवांटेज इन बस टोपोलॉजी इज इफ bus cable stop in one system connection, so stops all transmission in whole network. The damaged or reflect signals back in the direction of origin, creating noise in both directions. Okay, so this is the major disadvantages of bus topology. I hope आपको समझ में आया होगा. Now थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं लेक्चर में. अब देखते हैं रिंग टोपोलॉजी. Each device has a dedicated point-to-point connection with only the two devices on either side of it. Okay, each device in the ring cooperates a repeater. When a device receives a signal intended from another devices, its repeater regenerates the bits and passes them along. Okay, ring topology में क्या कॉन्सेप्ट होता है गाइस? रिंग टोपोलॉजी में एज ए रिपीटर कंसेप्ट होता है. इन दिस व्हेन अ डिवाइस रिसीव्स ए सिंगल इंटेंडेड फॉर अनदर डिवाइसेस, इट्स रिपीटर जनरेट्स द बिट्स एंड पासेस देम अलोंग द डेटा. ओके, दिस इज द फिगर ऑफ रिंग टोपोलॉजी. यहाँ पर आपके सिस्टम्स कनेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ रिंग. ओके, एंड यहाँ पर आपके सिस्टम्स किससे जुड़े हुए हैं गाइज? एक रिपीटर्स से. ओके, नाउ एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी. फर्स्ट एडवांटेज इज इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर. ओके, रिंग टोपोलॉजी इज वेरी इजी टू इंस्टॉलेशन इन डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड रिकॉन्फ़िगर. रिकॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इजी इन रिंग टोपोलॉजी. नेक्स्ट आपका एडवांटेज है फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड एज इट इशूज अलार्म विच अलर्ट्स द नेटवर्क ऑपरेटर टू द प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन. ओके, फॉल्ट आइसोलेशन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में कोई फॉल्ट है, किसी भी केबल में फॉल्ट है, सो फॉल्ट आइसोलेशन इज वेरी इजी एंड सिंप्लीफाइड मैनर इन ring topology as it issues alarm which alerts the network operator to the problem and its locations. Okay, now disadvantages of ring topology. First disadvantage is a break in the ring can disable the entire network. Let's see again the ring topology structure. This is one. Here suppose ring break होती है guys, सो क्या होता है? आपका होल नेटवर्क इफेक्टेड हो जाएगा एंड स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज इन रिंग टोपोलॉजी. सो फर्स्ट वन इज ए ब्रेक इन द रिंग कैन डिसेबल द एंटायर टोपोलॉजी. एंड सेकेंड डिसएडवांटेज इज इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर हायर स्पीड लेंथ्स. मीन्स जो हायर स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनके लिए रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज रिंग टोपोलॉजी है जहां पर भी आपका एक रिंग फेल हुआ या फिर कहीं भी कुछ डिसेबल हुआ तो वहां पर आपका कंप्लीट होल नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा. ओके, नाउ हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की. मैश टोपोलॉजी, एवरी स्टेशन इज इंटरकनेक्टेड टू एवरी अदर स्टेशंस आर शोन इन द फिगर. ओके, यहाँ पर आपके कितने सिस्टम हैं? 1 2 3 4 5 6. मैश टोपोलॉजी में क्या कंसेप्ट है गाइस? मैश टोपोलॉजी में एवरी स्टेशन इज कनेक्टेड टू अनदर. मींस सपोज ये 1 है तो ये 2 से भी कनेक्ट होगा, 3 से भी कनेक्ट होगा, 4 से भी कनेक्ट होगा, 5 से भी कनेक्ट होगा, 6 से भी कनेक्ट होगा. एज अबव 1, सेकेंड वन इज 2. आपका 2 1 से भी कनेक्ट होगा, 3 से भी कनेक्ट होगा, 4 से भी कनेक्ट होगा, 5 से भी कनेक्ट होगा और 6 से भी कनेक्ट होगा. इसी तरह 3 4 5 6 भी आपस में सभी कंप्यूटर्स से कनेक्ट होंगे. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैश टोपोलॉजी. आगे बढ़ते हैं. n multiply n-1 divided by 2 duplex mode links are required for communication in both directions. Okay, in mesh topology, n multiply n-1 divided by 2 duplex mode links are required for communication in both directions. Each device on the network must have n-1 input-output ports to be connected to other n-1 stations. This is the very important part of mesh technologies, mesh topologies. Okay.
Now, advantages of mesh topology. So first advantage is the use of dedicated links guarantees that each connection can carry its own data load, thus eliminating traffic problems. Okay. Second advantage is this topology is robust. If one link becomes unusable, it does not incapacitate the entire system. Next advantage is there is advantage of security. Only the intended recipient sees the message on the dedicated line. Okay, mesh topology का सबसे बड़ा advantage guys, mesh topology robust है, and in mesh topology mesh topology security is achieved. Okay, only the intended recipient sees the message on the dedicated line. Fourth advantage of mesh topology is fault identification and fault isolation is easy because of point-to-point links. Okay, point-to-point links are available in mesh topology, so fault identification and fault isolation is very easy in mesh topology. Now, disadvantages of mesh topology. First disadvantage is as the hardware cables required for connection is more, it's expensive. Okay, mesh topology में systems connect करने के लिए hardware cables required होती हैं and they are very expensive. Okay. Second disadvantage is installation and reconnection are difficult because each and every particular systems are connected to others. Okay, so that's why installation and reconnection are difficult in mesh topology. Third disadvantage is the sheer bulk of the wiring can be greater than the available space. Okay, wiring and cables are very large number of wiring and cables in mesh topology, so the sheer bulk of the wiring can be greater than the available space. Means space कम हो जाता है जब systems को हम mesh topology में arrange करते हैं because wires और cables बहुत ज़्यादा space occupied करते हैं in mesh topology. I hope आपको clear होगा mesh topology. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में. अब देखते हैं hybrid topology. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं topologies में. Now hybrid topology. In this, more than one topology in a network. What is hybrid topology? Guys, this particular network में एक topology से ज़्यादा topologies available होती हैं. Means different types of topologies में आपका network arrange होता है, वहाँ पर उसको हम बोलते हैं hybrid topologies. Okay, for example this one, this is ring, this is, ये कौन सा topologies है guys? A star and this is bus. Okay, this is bus, this is ring and this is a star. Okay, so here three type of topologies are arranged in a network: bus topologies, ring topology and star topology. Okay, so this is called hybrid topology. Now advantages of topology is, so first advantage is fault detection is easier in hybrid topology. Okay, next advantage is we can add new stations without affecting the original architecture of topology. Okay, the main advantage of hybrid topology is we can add new stations without affecting the original architecture of network. Okay, now focuses on disadvantages of hybrid topology. First one is as different topologies are combined, so complexity of design increases. Okay, this is natural. जहाँ पर different types of topologies are combined है, so वहाँ पर आपकी complexity high हो जाती है, increase हो जाती है. Okay, very less practical implementation in hybrid topology. Next disadvantage is the hub which is used to connect different topologies is very costly. Moreover, the cost of whole infrastructure is very high. Okay, basically जो hub use किया जाता है topologies को connect करने के लिए, systems को connect करने के लिए, वहाँ पर cost बहुत high हो जाती है and overall cost of whole infrastructure is very high. Now, three topologies. This topology uses the combination of star and bus topology.
Okay, so this is 1 mark question. Tree topology is a combination of star and bus topology. Okay, this is the structure of tree topology. Now, advantages of tree topology. First advantage is expansion is easier. One can add new stations easily. Means ट्री टोपोलॉजी में आप इजीली न्यू स्टेशंस ऐड कर सकते हैं. एक्सपेंशन इज ईजियर इन ट्री टोपोलॉजी. सेकेंड एडवांटेज इज एरर्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड इन ट्री टोपोलॉजी. Third advantage is robust. If one link fails, the remaining system is in communication. Okay. Now, disadvantages is with the increase in the number of nodes, complexity and maintenance becomes difficult. Okay. So, maintenance is difficult in tree topology. This is the disadvantage of tree topology. Now, examples. The most common type of local area network is an Ethernet LAN. Okay. So for examples, आपसे एक most common type of local area network का नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. So answer is Ethernet LAN. The smallest home LAN can have exactly 2 computers. A large LAN can accommodate thousands of computers. Many LANs are divided into logical groups called subnets. Okay, यहाँ पर एक न्यू हमें कंसेप्ट पता चला है. Many LANs are divided into logical groups called subnets. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है what is subnets? So answer is many LANs are divided into logical groups called subnets. Okay, and internet protocols means IP class A. LAN can in theory accommodate more than 16 million devices organized into subnets. Okay, guys, this is all about LAN and LAN topologies. अब तक हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन. नेक्स्ट हमने LAN देखा, व्हाट इज LAN. नेक्स्ट हमने देखा LAN टोपोलॉजीज. एंड नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेक्चर में. अब हम पढ़ते हैं MAN. व्हाट इज MAN? MAN stands for Metropolitan Area Network. Okay, a Metropolitan Area Network is a computer network that usually spans a city or a large campus. A MAN usually interconnects a number of local area networks, means LANs, using a high capacity backbone technology such as fiber optical links, and provides uplink services to wide area networks or WAN and the internet. Okay, so MAN is a computer network that usually spans a city or a large campus. Okay, now focuses on WAN. WAN stands for wide area networks. Okay, connect larger geographic areas such as Florida, the United States or the world. Okay, and what is the example of WAN? Your internet. Okay, internet is the example of wide area networks. Dedicated transoceanic cabling or satellite uplinks may be used to connect this type of network. A WAN is complicated. It uses multiplexers to connect local and metropolitan networks to global communications networks like the internet. Okay, so internet is the example of WAN. To users, however, a WAN will not appear to be much different than a LAN. As the term implies, a WAN spans a large physical distance. The internet is the largest WAN spanning the earth. Okay, a WAN is a geographically dispersed collection of LANs. A network device is called a router connects LAN to a WAN. In IP networking, the router maintains both a LAN address and a WAN address. Okay, a WAN differs from a LAN in several important ways. Most WANs, like the internet, are not owned by any one organization but rather exist under collective or distributed ownership and management. WANs tend to use technology like ATM, frame relay and X.25 for connectivity over the longer distances. Okay. Residences typically employ one LAN and connect to the internet WAN via an internet service provider using a broadband modem. The ISP provides a WAN IP address to the modem, and all of the computers on the home networks uses LAN, so called private IP addresses. Okay,
All computers on the home LAN can communicate directly with each other, but most go through a central gateway, typically a broadband router, to reach the ISP. Okay, ISP stands for Internet Service Provider. Okay guys, now let's wind up the lecture. See you in the next lecture, means Computer Network Lecture 2. I hope आज का lecture आपके लिए relevant रहा होगा, आपके लिए helpful रहा होगा, आपको समझ आया होगा. If you trouble in any problem, let me know in comment section. Thanks for watching this video. Make sure to subscribe to my channel for more updates, and wish you a very all the best for your examination. Please share this video with your friends. Thank you. Bye bye.